Our today's topic is related to, as I told you, how to write mail for acceptance letter. So there are some key points. So let's see, because there are some questions related to acceptance letter. तो वो questions कौन से हैं ये हम देखते हैं जी. Before starting those questions, I am gonna tell you one thing, like writing an email to a CSC professor for an acceptance letter is an important step इन द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस. वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो इट्स मीन आपने 50% सिक्योर कर लिया अपनी CSC स्कॉलरशिप. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये देखते हैं. विच टाइम इज बेस्ट टू सेंड ईमेल टू प्रोफेसर. ओके, फिर उसके बाद है हाउ टू राइट मेल फॉर एक्सेप्टेंस लेटर. देन देयर इज which email ID is best to send Chinese professor. इसके अंदर मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ आगे. How many times we can send mail to professor, what is a reminder email, and at the end there are samples of email. तो वो देखते हैं क्या है. So which time is best to send email to professor. तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है. वैसे आपको मैं रफली बता देता हूँ इसके अंदर कि जब आप देखें कि जैसे हमने अभी 2024 के लिए अप्लाई करना है, तो आज सितंबर का मंथ स्टार्ट है. तो सितंबर में बेसिकली चाइनीज़ की वेकेशंस ऑफ हो जाती हैं. दे आर इन देयर रूटीन. तो न्यू बैच आए होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा बिजी होता है, प्रोफेसर्स भी, मैनेजमेंट भी, हर चीज़ उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सी चीज़ों में. तो बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है अक्टूबर, या फिर आप ज़्यादा ही आपको जल्दी है तो यू कैन राइट मेल टू प्रोफेसर एट द एंड ऑफ सितंबर के एंड में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मेल करना. लेकिन बेस्ट टाइम जो कहा जाता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ तक, और इंशाल्लाह तब तक मिल ही जाती है. तो which time is best to send email to professor? Remember that email response time can vary widely depending on the professor's workload and personal preferences. Okay, if you don't receive a response within a reasonable time frame, it's okay to send a polite follow-up email भी बताऊंगा, जिसे reminder email कहते हैं. Be patient and respectful in your communication. Okay, weekdays during business hour, ठीक है, उसके अंदर आप कर सकते हैं प्रोफेसर आर मोर लाइकली टू चेक देयर ईमेल्स ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस आवर्स और वीकडेज. टिपिकली इट इज़ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM आप कर सकते हैं इसके ड्यूरेशन के अंदर. सेंडिंग यूर ईमेल ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्रीज द चांस ऑफ इट being noticed. Okay, and avoid early morning and late evening. ये नहीं हो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अर्ली नहीं, ठीक है. और या देयर इज़ रिटन ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग ईमेल्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर 8 AM और वेरी लेट एट नाइट आफ्टर 9 PM. तो ये ध्यान रखना है कि सुबह आप 5 बजे तो कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं 6 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक. बट यू हैव टू आल्सो काउंट द इवनिंग टाइम. अगर आप इवनिंग 6 बजे करते हैं तो प्रोफेसर का टाइम क्या होगा, 9 बजे. तो यू हैव टू काउंट द टाइम जोन. ओके, इफ यू आर नॉट इन चाइना. तो दैट इज द वाइस अवॉइड इट. अवॉइड पीक टाइम्स. ओके, तो आपने पीक टाइम्स क्या है, ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग ईमेल्स ड्यूरिंग पीक टाइम्स एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द सेमेस्टर. ओके, व्हेन प्रोफेसर आर स्वैम्प्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ग्रेडिंग एंड एडवाइजिंग. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है, बेसिकली सितंबर में स्टार्ट होता है, तो उस टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रोफेसर्स ईच एंड एवरीवन इज बिजी. ओके, तो उस टाइम आप अवॉइड करें. एंड कंसीडर टाइम जोन आप बिल्कुल कंसीडर करें, बिकॉज वहाँ का टाइम डिफरेंट है आप जिस कंट्री में है. लाइक फॉर एग्जांपल वी आर इन पाकिस्तान, देयर इज a 3-hour डिस्टेंस of time between Pakistan and China. If you are in another country, you should have to consider the time zone. If you and the professor are different time zones, in the different time zones, be mindful of time differences. Okay, use tools like word clock or time zone converter to determine an appropriate time.
तो ये तो आपका टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, विच टाइम इज बेस्ट टू सेंड ईमेल टू प्रोफेसर। सो नेक्स्ट इज हाउ टू राइट मेल फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सिंपल वर्ड के अंदर ये टू द पॉइंट मेल लिखनी चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड और मैनरफुल वे में होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप उसके अंदर अपनी इधर उधर की बातें करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू राइट, यू शुड हैव अ सब्जेक्ट लाइन। ओके, यूज अ clear and concise subject line that summarize the purpose of your email. For example, that is like request for acceptance letter for your scholarship program name. Okay, CSE, इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन ये होना चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। ओके, और आई वांट to study in your supervision. Yeah, that is also a good subject line, but the basic one which everyone used is request for acceptance letter. Okay, afterward there should be salutation. Okay, start your email with a polite salutations, like addressing the professor by their proper title and the name, such as dear Professor Chang, dear. You should not like write dear. In fact, you can write respected professor or like that. There should be some kind of manner and respect, okay, for a professor. Then what is the other thing? There is an introduction. Okay, in the opening paragraph, introduce yourself briefly. Okay, you should write like I am whatever XYZ, I belong to that country, I have been done my bachelor's, like that. You can write your introduction. So mention your name, your current academic status. Sorry, what happened to that? Wait, sorry for next topic जो हमारा है पड़ा वो है how many times we can send mail to professor. तो इसके अंदर ये है कि इनिशियल कॉन्टैक्ट आपने देखना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना है उससे, फिर उसके बाद फॉलो अप ईमेल, अवॉइड ओवरवेलमिंग एंड यूज अदर कनेक्शंस चैनल as well as respect their communication preferences. Okay, तो सबसे पहले तो आपने एक दफ़ा आपने सेंड कर दी, ओके, नो डाउट। फिर अगर आपको क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आ रहा, प्रोफेसर आपको मेल नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आपने क्या करना है। अब देखिए, फर्स्ट तो ये है कि इनिशियल कॉन्टैक्ट आपने किया। व्हेन रीचिंग आउट टू प्रोफेसर फॉर द फर्स्ट टाइम, it's typically acceptable to send one initial email expressing your interest, introducing yourself, and explaining the reason of your email. Make sure this email is clear and concise. पहले आपने सेंड कर दी, ओके। अब हमारा टॉपिक क्या है कि कितनी दफ़ा हम सेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपको मेल नहीं आ रही तो फॉलो अप ईमेल करें आप। इफ़ यू डोंट रिसीव रिस्पॉन्स टू योर इनिशियल email within a reasonable time frame, for example usually 1 to 2 weeks, it's generally acceptable to send a polite follow-up email as a reminder. इसको रिमाइंडर ईमेल भी आप कह सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, सॉरी नेक्स्ट पेज पे। Keep your follow-up email brief and respectful and consider asking if they received your initial message or not. Simple follow-up email आप कर सकते हैं after 2 weeks. Avoid overwhelming, like avoid sending an excessive number of emails, especially if they are not related to urgent matters or essential updates. Professors are often busy with teaching, research, and other responsibilities, so be considerate of their time. Okay, तो आप इस तरह नहीं कि अगर एक आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आप फिर दोबारा बार बार कर रहे हैं, तो you should think on that. Then use, there is like you can use wait you can use other communication channels. If you have other ways of contacting the professor like through social media or academic networking platforms, अगर आपके पास उनका वही चैट है, व्हाट्सएप है, तो आप यूज़ कर सकते हैं उनको। use these channels, and professionally email is generally the most formal and appropriate means of communication for academic and professional matters. Okay, तो वैसे तो आप ईमेल ही करें। अगर आपके पास प्रोफेसर का कहीं से बाई चांस नंबर है ये वो आ जाए तो आप उससे कर सकते हैं बात।
Respect their communication preferences. Okay, some professors may specify their preferred method of communication in their email signature or on their websites. If they prefer a certain way of contacting them, try to be respect that preferences. अगर कुछ किसी प्रोफेसर का अगर आपको मेल वगैरह मिल जाती है कहीं से या नंबर वगैरह मिल जाता है तो यू शुड think on that. Do not just start sending mails without thinking of the time, duration, time zone, each and everything. We should have to think on that. क्योंकि प्रोफेसर वाकई बहुत ज़्यादा जो बैचलर्स करके आए उन्हें पता होगा. So what is a reminder email? Okay, a reminder email is a type of email message that is sent to remind someone about a specific event, task, appointment, deadline, or commitment. Its purpose is to help ensure that the recipient does not forget or overlook the scheduled or expected activity. Reminder emails are commonly used in various contexts, including professional, personal and organizational settings. तो बेसिक यही है कि उसको आपने रिमाइंड करवाना है अपने प्रोफेसर को अगर आपको मेल नहीं आ रही तो सिंपल आपको समझ आ गई होगी इसकी. सो नेक्स्ट इज हाउ टू राइट रिमाइंडर ईमेल. अगेन इसके अंदर सिंपल और ये आप देखें पहले. रिस्पेक्टेड प्रोफेसर XYZ, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल. I wanted to gently remind you about the subject of the reminder. जो आपका subject है CSC के related है कि acceptance letter दो. As the date approaches, I thought it would be helpful to send a brief reminder. अगर किसी को मेल नहीं आती तो आप ये copy paste कर सकते हैं. That is very good. बस दुआ कीजिएगा. Afterwards there is provide context or detail about what you are reminding them about. Be clear and concise. Include any relevant dates, times or locations. Okay, so as a quick recap, reminder point 1, reminder point 2, reminder point 3 आप इसके अंदर कर सकते हैं. कोई भी एक रिमाइंडर उसको आप बता सकते हैं. Then if necessary, explain the importance or consequences of the task or meeting. सिंपल आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो बहुत है अगर आपको रिप्लाई देना होगा उन्होंने तो. योर अटेंशन टू दिस मैटर इज जनरली अप्रिशिएटेड एंड आई थैंक. ये आप देख सकते ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर. सॉरी ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ. पहले अगर आपने ये लिख लिया रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, उसके बाद आपने इतना पार्ट ले लिया, उसके बाद आपने क्विक रिकैप दे सकते हैं कुछ भी लाइक सर आई नीड प्रोफेसर आई नीड एक्सेप्टेंस लेटर फॉर द CSC स्कॉलरशिप और कोई एक आध और पॉइंट आप साथ आई एम वट एवर माई CGPA कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं. फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है. प्रोफेसर को बोल रहे हैं योर अटेंशन टू दिस मैटर इज greatly appreciated and I thank you in advance for your prompt action. Okay, तो आप ये बोल सकते हैं if you have any question or require any additional information please feel free to reach out to me at this email. आप मुझे भी लिख सकते हैं. I look forward to the upcoming meeting, seeing the complicated task, other relevant outcomes and I am confident that I will handle it efficiently. Thank you for your time and consideration. Best regards. Full name, your job title, whatever it is, your contact information. तो ये होती है रिमाइंडर ईमेल, किसी को अपनी याद दिलवाना. सिंपल. अच्छा जी, तो अब आपको एट द एंड यही है कि सैंपल ऑफ ईमेल फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर. ओके, तो इसके अंदर हम सैंपल देखते हैं. ये आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी. आप PDF भी ले सकते हैं मुझसे ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो इंशाल्लाह बस वैसे ही आपको मैं बता देता हूँ. सिंपल सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर CSC स्कॉलरशिप. ये आप सिंपल लिख सकते हैं, बहुत ही कॉमन है. रिस्पेक्टेड प्रोफेसर whatever it is, I hope this email finds you well. My name is XYZ and I am writing to express my sincere interest in pursuing my master's PhD studies at University of dash 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 under the CSC Scholarship program. I have had the opportunity to thoroughly review your research in whatever it is and I am deeply impressed by your contribution to the field, particularly your work on mention a specific जो भी उसका काम है publish है आप लिख सकते हैं. ठीक है, your expertise aligns perfectly with my academic and research interest and I believe the working under your mentorship would be invaluable experience for my academic and career growth.
तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो आप इसको खुद पढ़ लें, ठीक है। पहले टाइटल आ गया, सॉरी सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये टाइटल आ गया, फिर उसके बाद आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आ गई, फिर उसके बाद आप प्रोफेसर को थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं अच्छे वाला, फिर उसके बाद आप नीचे आए थोड़ा सा तो इसके अंदर आपको क्लियर मिल जाएगा। एंड ये मक्खन वो मक्खन है कि जो प्रोफेसर ने बहुत मेहनत के बाद हासिल किया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उनकी। आप लाजमी जो भी आप प्रोफेसर के अंडर काम करना चाहते हैं या पीएचडी मास्टर्स, तो काइंडली 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 आप उसकी रिसर्च वर्क देखें और आपको पता चलेगा कि ही हैज़ डन समथिंग वेरी गुड। ओके, थैंक यू फॉर, एट द एंड आपने सिंपल ये लिखना है, उसके बाद आप आ जाएं जी, ये चीज़ें हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप अपनी स्क्रीनशॉट भी ले सकते कर लेना चाहें तो ये सेकंड सैंपल है। ओके फाइन, होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन फॉर टुडे। Inshallah, in the next video, we are gonna talk about how to make a professional CV.